Hello everyone. Welcome to the virtual class of NET, SET and other competitive examination related to the field of academics. In previous session, I have discussed basics of teaching aptitude. And in this session, I would like to discuss a few basic concepts related to different methods of teaching and 10 important multiple choice questions from teaching aptitude. Later on, I will include a few more important concepts and a few multiple choice questions in next videos. So let us start discussion on one of the most important topic from teaching aptitude, and it is all about important methods of teaching. As we all know that teachers are teaching in the classroom using different methods, and these all methods are subject to its utility and limitations. Today, in this session, I would like to incorporate a few important methods of teaching that we are using in our classroom in day-to-day routine. The first and foremost method is lecture method. Lecture method is the most commonly used method of teaching science. Teaching science does not mean it is applicable to the science faculty. As we discussed in earlier session, teaching is a combination of arts and science. So as you can say, it is useful for each and every faculty. It is a teacher controlled and information centered approach in which the teacher works as a sole resource in classroom instruction. मतलब टीचर क्लासरूम में अपनी ओर से पूरी तैयारी के साथ आते हैं, जो कुछ भी वो जानते हैं वो बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। टीचिंग में सबसे पुरानी मेथड इन मॉडर्न टीचिंग, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ टीचिंग, क्योंकि सभी स्कूल कॉलेजेस में जनरली लेक्चर मेथड से ही क्लास चलती है। सेकेंड मेथड is a dictation method. Dictation is the process of writing down what someone else has said. जनरली क्या होता है, टीचर क्लासरूम में आते हैं, वो जो कुछ भी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं उसके लिए हमें अलग से एक नोट प्रिपेयर करनी होती है। टीचर से बोलते हैं, हम लिखते हैं। टीचर्स किसी भी टॉपिक के बारे में बड़ी अच्छे से क्लासरूम में डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन के साथ साथ वो हमें डिक्टेशन मानी लेखन भी करवाते हैं, ताकि एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन वी हैव रेडीमेड नोट्स of that particular chapter, topic or question. So this is the second method of teaching in the classroom. Third, it is a discussion method. Discussion involves two-way communication between participants. In the classroom situation, an instructor and trainees
All participant all participate in a discussion. During the discussion, the instructor spends some time listening while the trainees spend some time talking. The discussion is therefore a more active learning experience for the trainees than the lecture. लेक्चर मेथड में क्या होता है? टीचर्स बोलते हैं, स्टूडेंट्स सुनते हैं। लेकिन डिस्कशन मेथड में टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों बारी बारी से बोलते हैं। मतलब टीचर द्वारा कोई एक प्रश्न बच्चों को पूछा जाएगा, बच्चे उस प्रश्न के बारे में जो कुछ भी वो जानते हैं वो क्लासरूम में सबके सामने रखेंगे। इट मीन्स ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लासरूम इज गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू शेयर his or her viewpoint on the concerned topic. Lecture method was a one-way method because the teacher has delivered the lecture, but in a discussion method, it is a two-way communication because a few things discussed by teachers in the classroom and in the response of the questions asked by the teacher, students may put his or her stand. So it's a more interactive method as compared to first two methods, that is a lecture method and discussion method. The fourth one is seminar method. Seminars are simply a group of people coming together for the discussion and learning of specific techniques and topics. This method is generally used in higher education. Teacher may assign a few topics to the group of the students. The students have to prepare their own stuff with the coordination of each other. They have to prepare and present the stuff, the content they have prepared related to the topics given by the teachers. It is also one of the innovative, one of the modern method of teaching, and as compared to lecture method, dictation method and discussion method, this method is more effective to ignite the minds of the students related to concerned topics. Next is project method. One of the modern method of teaching in which the student's point of view is given importance in designing the curricula and content of studies. This method is based on the philosophy of pragmatism and the principle of learning by doing. अगर सीखना है तो कुछ काम करो, काम करके सीखो, क्योंकि पहली जो चारों मेथड्स थी वहां पे सिर्फ थियोरिटिकल बात थी। बच्चे सीखेंगे लेकिन सिर्फ प्रिंसिपल्स के हिसाब से। बट इन अ प्रोजेक्ट मेथड ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक they need to exercise in a practical way. So the practical approach is incorporated with the project method. Here, the point of view of the student has its own importance because the student has to design the content of the study, the content of the concerned topic. And this is really effective method because it is based on a principle of learning by doing, not learning by listening only. Learning by listening
is less effective, but learning by doing is more effective. So it is one of the effective method of learning. Then case study method. The case study method is a participatory, discussion based way of learning where students gain skills in critical thinking, communication, and group dynamics. It is a type of problem based learning. अगर आप ठीक से सोचो तो ये मेथड बहुत काम की है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जब क्लासरूम की चार दीवारी से बाहर जाता है तब उसे जमाने को फेस करना पड़ता है और वहां पे सिर्फ थियोरीज नहीं चलती. सो इन दिस मेथड वी हैव सम पार्टिसिपेटरी रोल ऑफ द स्टूडेंट्स. चलो हम एक इजी एग्जांपल से समझें. If you want to explain the functions and role of marketing manager in the company, you can simply discuss using a lecture method. And in this way, you can explain the role and functions of the marketing manager to the students. पर बच्चे को मार्केटिंग मैनेजर को क्या करना है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स वो फेस करेगा, उसके बारे में यहां पे पता नहीं चलेगा. तो लेक्चर मेथड की जगह अगर हम केस स्टडी मेथड अडॉप्ट करें तो मार्केटिंग का कोई एक प्रैक्टिकल केस और प्रॉब्लम बच्चों के सामने रखें. 2-3 बच्चों को आप मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव यानी सेल्समैन भी बनाएं और एक बच्चे को आप काम सौंपे कि वो मार्केटिंग मैनेजर बन के उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले. तो अब क्या होगा? जो बच्चा सिर्फ लेक्चर सुन के थ्योरी रट्टा मार के पास होता था, नाउ द स्टूडेंट हैज टू इन्वॉल्व इन क्रिटिकल थिंकिंग because now he is involved in case study method. In order to solve the case of marketing, he has to divert his thinking from routine to the case, to the situation. And he has to find some concrete solution of the problem. This is more effective method than that of lecture, discussion, and seminar method. Generally, higher educations, specifically in MBAs or MHRDs or a Masters in Financial Management or in any other specific areas of management, the method of case study is working very effectively because the teachers are teaching with this method and it will provide base of real life situations to the students. Then brainstorming method. In context of teaching, brainstorming is a strategy or tool of teaching used by the teacher in which maximum or all the students participate by responding or presenting views on one topic. This technique encourages new ideas among students which would never have happened under normal circumstances. It means आप बच्चों के सामने कोई एक समस्या रखो और बच्चों को आप बताओ कि उस समस्या के बारे में उसका खुद का क्या ओपिनियन है. यह भी हो सकता है कि आपके क्लास के सारे बच्चे ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड के थ्रू पार्टिसिपेट करें. यह भी हो सकता है कि कुछ बच्चे पार्टिसिपेट करें, कुछ बच्चे अपना ओपिनियंस ना दें. लेकिन इस मेथड में ये खूबी है कि इस मेथड के
उपयोग के द्वारा हम बच्चों को उनके नए नए आइडियाज़ के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जो आइडियाज़ उनके पास है, आज तक उन लोगों को वो आइडियाज़ किसी से शेयर करने का मौका भी न मिला हो, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड के हिसाब से अगर आप क्लासरूम में चलते हो तो ये भी हो सकता है कि हर एक बच्चा या बहुत सारे बच्चे वो खुद क्या सोच रहे हैं वो आपको बताए और उसमें से कुछ समस्या का एक अलग से हल निकले। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। एंड लास्ट, रोल प्ले मेथड। In this method, participants use their own experiences to play a real life situation. When done well, role plays increase the participants' self confidence, give them the opportunity to understand or even feel empathy for other people's viewpoints or roles, and usually end with practical answers, solutions, or guidelines. Role plays are useful for exploring and improving interviewing techniques and examining the complexities and potential conflicts of group meetings. They help participants to consolidate different lessons in one sitting and are good energizers. Role play method. Role play method will give you a chance to feel, to understand the situation. चलो एक एग्जाम्पल से समझे। अगर आप किसी को ये बोलो कि आप एक सैनिक के बारे में कुछ कागज पे लिखो, तो क्या होगा? वो बच्चा कागज पे अपने दिमाग में जो ख्यालात आएंगे वो लिखेगा। इसकी जगह आप बच्चे को ये भी बोल सकते हो कि कल तुम एक सैनिक बन के आओगे, पूरे ड्रेस में, पूरे एटिकेट्स के साथ। तो वो बच्चा घर जाके क्या करेगा? वो आज से ही तैयारियां शुरू कर देगा कि कल मुझे एक सैनिक बनना है, ड्रेसिंग करनी है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है। सो he or she is starting to feel like a soldier, and when one is starting to feel, the understanding become the most easiest for that particular student. So this is one of the best method, and that is why in our early childhood days, specifically in primary education, on specific occasion we used to dress up like different idols, maybe god, maybe soldiers, maybe uh, uh, a fairy, or any other character that we like the most, and it will give you chance to fill that particular character. So you can understand very easily with the help of role play method. There are a few important methods that I have discussed with you related to teaching. Now, as I discussed in the beginning of this video, I would like to discuss 10 multiple choice questions related to teaching with you. And in case of a few questions, I will explain with details. Question number 1. Effectiveness of teaching has to be judged in terms of option A, students' interest, option B, use of teaching aids in the classroom, option C, course coverage, and option D, learning outcomes of the students. आप टीचिंग की असरकारकता, इफेक्टिवनेस कैसे जज करोगे?
स्टूडेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से, टीचर क्लासरूम में टीचिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करता है उसके हिसाब से, कोर्स में क्या क्या इंक्लूड किया गया है उसके हिसाब से, या लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चा उसमें से क्या सीखता है उसके हिसाब से। सो द करंट आंसर, द करेक्ट ऑप्शन इज डी। Effectiveness of teaching has to be judged in terms of learning outcomes of the students. Question number 2. Sorry, before question number 2, it is necessary for all of you to understand the explanation. Learning outcomes are statements of the knowledge, skills, and abilities individual students should possess and can demonstrate upon completion of a learning experience or sequence of learning experience. So the correct answer is a D. Learning outcomes of the students is the measure of effectiveness of teaching. Question number 2. In which teaching method learners' participation is made optimal and proactive? Project method, discussion method, brainstorming method, and none of the above. The correct option is A, project. As you all know, project based learning is a teaching method in which students gain knowledge and skills by working for an extended period of time to investigate and respond to an authentic, engaging, and complex question, problem or challenge. So, आपके सामने जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से करेक्ट ऑप्शन है ए, प्रोजेक्ट मेथड, because in project method we can expect learners participation at optimal and proactive level. Question number 3. One of the most powerful factors affecting teaching effectiveness is related to the socio-economic condition, political system, educational system, and none of the above. I would like to discuss at this point of time that socio-economic condition, political system, and educational systems are factors affecting the teaching. But the question is a most powerful factor. So we need to answer very precisely, and the answer is educational system, because educational system is a most powerful factor from the given factors that is affecting to the effectiveness of teaching. Let us move to question number 4. Which of the following learner characteristics is highly related to effectiveness of teaching? A, socio-economic condition, B, academic background of parents of the students, C, family background of the student, and D, prior experience of the learner. Here you need to understand the question very properly. Which of the following learner characteristics is highly related to effectiveness of teaching? So the correct answer is a prior experience of the learner. It means what? If the learner is learned, और अगर जो सीख रहा है उसने पहले भी कुछ थोड़ा बहुत अनुभव किया है, और थोड़े बहुत अनुभव के बाद वो अगर सीख रहा है तो उसकी सीखने की क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी. So the correct answer is prior experience of the learner. Let us move to question number 5. It is one of the important question because
These kind of question may be included in the topic ICT, Information and Communication Technology, used in teaching. Which of the following does not belong to a projected aid? A. Blackboard. B. Overhead projector. C. Slide projector. And D. एपिडिस्कोप। आपने देखा होगा कि कई बार, और हायर एजुकेशन में तो बहुत ज़्यादा, टीचर्स ब्लैक बोर्ड के साथ साथ ओवरहेड प्रोजेक्टर या प्रोजेक्टर या एपिडिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से टीचिंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। क्योंकि अगर मैं कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिखूं और बच्चे समझे, और मैं बच्चों को प्रोजेक्टर की मदद से उनको दिखाऊं, तो वो जल्दी समझेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ए, ब्लैक बोर्ड, क्योंकि बी, सी और डी आर इंक्लूडेड इन प्रोजेक्टेड एड। Let us understand the meaning of projected aids. Projected aids, referred to as visual instructional device which are shown with a projector, are called projected aids. प्रोजेक्टर के माध्यम से आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो ये सभी चीज़ें प्रोजेक्टेड एड्स की डेफिनेशन में शामिल होगी। एग्जाम्पल: स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स, साइलेंट फिल्म्स, कार्टून्स, etc. Projected through an opaque projector, epidioscope, or an overhead projectors are also part of projected aids. आपको ये चीज़ बड़े अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन में से 2-3 अलग अलग तरह के क्वेश्चन डिजाइन किए जा सकते हैं। सो आई हैव डिस्कस्ड one question with you as question number 5, but from the content that I have discussed with you, one can frame 3 to 4 different questions using this content. Let us move to question number 6. A teacher can be successful if he or she is: option A, helps students in becoming better citizens; B, presents the subject matter in a well-organized manner; C, prepares students to pass the examination; D, imparts subject knowledge to students. एक टीचर को, एक शिक्षक को हम सफल शिक्षक बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं? जब वो स्टूडेंट्स को एक अच्छा नागरिक बनने में मदद करें, अपना जो सब्जेक्ट कंटेंट है, जो अपनी विषय वस्तुएं हैं, वो अच्छी तरह से क्लासरूम में प्रेजेंट करें, बच्चों को एग्जामिनेशन पास करने के लिए तैयार करें और बच्चों को अपने विषय का ज्ञान दें। सही आंसर है, करेक्ट ऑप्शन इज बी, presents the subject matter in a well-organized manner. A teacher can be successful if he or she presents the subject matter in a well-organized manner, because the first and foremost role is to present the subject content with utmost excellence in the classroom. So ऑलवेज टेक केयर ऑफ दीज आंसर, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको ये लग सकता है कि ऑप्शन ए होना चाहिए। जो टीचर अपने बच्चों को बेटर सिटीजन्स बनाने में लगा है, वो अच्छा शिक्षक बना जाएगा। सही बात है, ये भी हो सकता है, लेकिन अगर एक शिक्षक क्लासरूम में सिर्फ आइडियोलॉजी की ही बात करे, अपने सब्जेक्ट को साइड में रख के, सो एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा?
ये आप अपने हिसाब से ही सोच लो। We need to impart the values in the student. We need to make them better citizen. We need to make them responsible citizen. But first of all, as a teacher, my first and foremost duty is to present the content assigned to me with utmost care and utmost expertise. So correct option is B. Question number 7. Which one of the following is the main objective of teaching? A. To give information related to the syllabus. B. To develop thinking power of students. C. To prepare students to pass the examination. D. To dictate notes to students. The main objective of teaching is to develop thinking power of the students. Once they are able to think independently what is right and what not, or what to do and what not to do, the aim of teaching comes to an end. So we need to develop thinking power of the students through the teaching. So it is the main objective of teaching that even we have discussed in first session. Question number 8. Which one of the following is a good method of teaching? I have already discussed different methods of teaching with you in the beginning of the session. A. Lecture and dictation. B. Seminar and dictation. C. Seminar and project. And D. Dictation and assignment. On your screen, pairs are given for the teaching method. Option A includes two methods, lecture and dictation. Option B includes seminar and dictation. Option C includes seminar and project, and option D includes dictation and assignment. If you have gone through the basic discussion of teaching methods in the beginning of the video lecture, you should be clear for the answer of the question. And the answer is C, seminar and project. Lecture method, dictation method, and I have discussed that seminar is better than lecture and dictation, and project is even better than lecture, dictation and seminar. So here pairs are given for the teaching methods. So the correct pair is seminar and project. Question number 9. Effectiveness of teaching depends on A. Subject understanding of teacher. B. Personality of a teacher. C. Handwriting of teacher. And D. All of this. टीचिंग की इफेक्टिवनेस किस चीज पर आधारित है? ऑप्शन 1, सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर. टीचर सब्जेक्ट के बारे में कितना जानता है, कितनी गहराई से जानता है, कितना एक्सपर्ट है. सेकंड ऑप्शन, पर्सनालिटी ऑफ टीचर. थर्ड, हैंड राइटिंग ऑफ टीचर, मानी टीचर की लिखाई. और चौथा, ऑल ऑफ दिस. मुझे पता है कि अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आया तो आप ऑप्शन डी को ही सिलेक्ट करोगे, लेकिन ये गलत है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर. पर्सनालिटी ऑफ टीचर इज नॉट रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग. मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं. आप बॉलीवुड में से कोई एक हीरो
जिसको आप पसंद करते हो, हीरो हीरोइन कोई भी, और क्रिकेटर्स, आप जिसको भी पसंद करते हो उसको आपके क्लास में टीचर्स के हैसियत से बुलाओ। यह भी हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको मजा आए क्योंकि वो आपकी पसंदीदा किरदार है, लेकिन आप बहुत ज्यादा देर तक एंजॉय नहीं करोगे क्योंकि उसके पास कंटेंट नहीं होगा। इस मॉडर्न जमाने में जहां पे बोर्ड पे लिखना थोड़ा कम हो गया है और वी हैव सम modern technologies to deliver in the classroom, handwriting is also the secondary matter. The correct option is a subject understanding of teacher. वो टीचर अपने सब्जेक्ट के बारे में कितनी गहराई से जानता है, उसको अपने सब्जेक्ट का, उसको अपने टॉपिक का कितना नॉलेज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, subject understanding of teacher. And the last question number 10. Effective teaching is a function of A, teacher's satisfaction, B, teacher's honesty and commitment, C, teachers making students learn and understand, D, last option, all of this. The correct option is C, teachers making students learn and understand. Because effective teaching, असरकारक शिक्षण तभी माना जाएगा जब एक टीचर अपने बच्चों को समझने में और सीखने में मदद करे। टीचर के खुद का संतोष, टीचर कितना ईमानदार और कमिटेड है, उसकी टीचिंग फंक्शन और इफेक्टिव टीचिंग फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगी। सो इफेक्टिव टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड today's session. I have collected all the resources from the different web resources given on your screen. So I am very much thankful to all the sites from where I have collected all the stuff for your better learning. Thank you. God bless you. Keep watching next sessions on teaching aptitude, one of the most important topics for paper number 1.